Hello students, Assalamu alaikum. This is Laiba Tariq, your biology instructor from tutoria.pk. Today we are doing the exercise of chapter 12, circulation. सबसे पहले start करते हैं from the MCQs. पहला MCQ है The rhythmic beating of cardiac muscle in the mammalian heart is initiated by atrioventricular node, parasympathetic nervous system, Purkinje tissue or sinoatrial node. So the correct option is option D, sinoatrial node. फिर आता है the red blood cells entering in the right side of the heart passing by or through the following structures: atrioventricular valve, semilunar valve, right atrium, right ventricle, sinoatrial node. In which order will the red blood passes the structures? तो इसके अंदर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 5. फिर है what effect would be caused by the cutting of sympathetic nervous fiber to the heart? जब हम सिंपैथेटिक नर्वस फाइबर को जो है वो हार्ट से कट करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा? तो इसका जो है वो ऑप्शन राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है कि आपका जो हार्ट बीट है उसके अंदर डिक्रीज हो जाएगा. देन वी हैव व्हेट प्रोड्यूसेस द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का जो है ऑप्शन राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल. देन वी हैव ह्यूमन हार्ट इज myogenic in nature, neurogenic, cardiogenic, या diagenic. So the right option is option A, myogenic. Then we have typical lapped up sound heard in the heart in heartbeat are due to closing of bicapsid and tricapsid valve. Option B, closing of semilunar valve. Option C, blood under pressure through aorta. Or option D, closure of bicapsid tricapsid valve followed by the semilunar valve. तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए है कि जब आपके वॉल्व्स क्लोज होते हैं तो उनकी साउंड जो है वो लप्ड अप क्रिएट करती है. देन वी हैव bicapsid valve connect right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle, left atrium, right ventricle, right atrium, left ventricle. तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम. देन वी हैव पेस मेकर इज सिचुएटेड इन हार्ट. ऑप्शन ए इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम. ऑप्शन बी ऑन इंटरआर्टिकुलर सेप्टम. ऑप्शन बी ऑन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. ऑप्शन डी इन द वॉल ऑफ लेफ्ट एट्रियम. तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम. फिर हमारे पास आता है ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल इन अ मेमेलियन हार्ट द राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेज. ऑप्शन बी द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व ओपन. ऑप्शन सी सेमिलुनर वॉल्व क्लोज. ऑप्शन डी आर्टिक प्रेशर डिक्रीजेज. तो जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन ए, वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेज. देन वी हैव lymph node returns dash to blood. Option A, oxygen. Option B, carbon dioxide. Option C, interstitial fluid. And option D, white blood cell. तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी है, interstitial fluid. फिर we have lymph mostly closely resembles which of the following: blood, urine, water या interstitial fluid. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, interstitial fluid. Which of these factors has little effect on blood flow in arteries? Option A, total cross-sectional area of the vessels. Option B, blood pressure. Option C, skeletal muscles contraction. Option D, heartbeat. तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी है, skeletal muscles contraction. The sinoatrial node, SA node, regulate the rhythmic of contraction. Is also called the AV node. Regulate the rate of contraction या is also called the bundle of His. तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है कि वो रेगुलेट करते हैं रिदम्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन.